dear student. Today I am going to discuss 3 questions of NCERT exercise question of chapter motion. I already discussed question number 1 and question number 2 in the previous lecture. In this lecture I will discuss question number 3, question number 4 and question number 5 of NCERT chapter motion. Okay, so here is the third question. In this question, this is Abdul, okay, and he is moving from his house to his school with a speed of 20 km per hour, and after some time he come back from school to house with a speed of 30 km per hour. You have to find the average speed. You cannot take directly sum of these two and divide by 2, that is 30 plus 20 divided by 2 is 50 km per hour is not the average speed. In this case you have to find the average speed. So the formula for average speed is total distance, write down total distance upon total time. Okay, suppose he is taking time t1 while going from his house to school, and he is taking time t1 while coming from his school to house. So what is the total time? t1 plus t2. And what is the total distance? Suppose the distance between Abdul house and school is d, then distance will not change, distance is constant. ऐसा थोड़ी है कि डिस्टेंस स्कूल जाने में कम हो जाएगा और स्कूल से घर आने में, घर की तरफ जब आएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. भले तुम स्पीड धीरे कम ज़्यादा स्पीड से आ सकते हो, लेकिन डिस्टेंस तो वही d रहने वाली है. सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस इज d प्लस d. व्हाट इज द टोटल टाइम? जाने की टाइम t1 थी, आने की टाइम t2 है, देयरफॉर टोटल टाइम इज t1 प्लस t2. दिस इज व्हाट? दिस इज एवरेज स्पीड. Okay, now time is not given, so you can change this time in terms of speed and distance. So you know the formula of distance is equal to speed into time. Then what is time? Time is equal to distance by speed. So in place of t1 what you can write? This is d plus d, that is 2d. In place of t1 what you can write? Time is equal to distance by speed. So t1 is the distance is d, and what is the time? Time is t1 plus, speed, distance by speed. What is the speed? You are converting this t1 into distance and speed. So while going from house to school, जब वो house से school जा रहा है उस समय उसकी speed कितनी है? 20 है. So you have to take here 20. Distance by speed is time. So this is time 1. Similarly, for time 2, distance is d and speed is 30. Now how to solve this? Very easy. Average speed. Okay. Now very easy. You have to cancel this. You take out LCM and you solve this. So average speed is equal to d plus d, that is 2d. How to solve this term? Take out LCM or directly you cross multiply and this one multiply. So this will become 20 into 30, that is 20 into 30. This will multiply and you now cross multiply 30d 20d. This is 30d plus 20d. ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, 30d 20d. So this will become how much? This will become d 2d. Okay, 2d. This is 50d, and this will come in numerator. You know this thing. Okay, ये तो numerator में चला जाएगा. So this will become 20 into 30. That is 600. Okay. Now d cancel. Okay. So this is 2 into 20 into 30 upon 50. This is d term. Okay, this is d term. So this will cancel. So 5 1 is 5, 5 6 is 30. So 2 2 is 4, 4 6 is 24. So 24. What is the unit of speed? Speed. The unit of speed is here. It is given. Sorry, you are finding the average speed. So average speed is how much? Average speed
is equal to, you have taken the speed that is in kilometer per hour, that's why answer will come in kilometer per hour. This is the answer. This is the practical unit of speed. क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया था ना, स्पीड तो 20 किलोमीटर पर आवर ही रखा था, हेयर ऑल्सो 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये ऊपर जाएगा, सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल while going from his house to school. Okay, you copy it. Question number 4. In this question it is given that a motor boat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far the boat travels during this time? Suppose first of all try to draw the diagram. This is boat, okay, and it start from rest. When any object, any body start from rest, it means its initial velocity कितनी होती है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ है. That's why initial velocity, that is u, is called initial velocity. Initial velocity, that is u, is equal to 0. Accelerates in a straight line, ये accelerate कर रहा है in a straight line at a constant, that is constant, a is constant. How much it is given? 3 meter per second square. Acceleration is constant, so you can use the kinematic equation. Whenever the acceleration is constant, you can directly use the kinematic equation. Clear? Otherwise you cannot use this. Okay, so acceleration is given for 8 seconds. Time is also given. A is given 3 meter per second square. Time is also given. Time is how much? 8 seconds. Now how far means कितनी दूर वो गया, है ना, कितनी दूर गया. how long बोलता तो कितना टाइम लिया. if it is already moving, that time initial velocity is not 0. when body start from rest, it means its initial velocity is 0. तो आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, कितनी दूर वो गया, कितना समय लिया नहीं पूछ रहा, कितनी दूर वो गया. जब उसकी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, 8 सेकेंड तक वो चल रहा है, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब वो 0 से स्टार्ट होता है. सो यू हैव 3 फॉर्मूला. सो विच फॉर्मूला यू विल यूज? you have to use the formula of distance, that is s is equal to ut plus half at square. क्यों ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है हाउ फार, कितनी दूर जाएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. क्योंकि एवरीथिंग इज गिवन, a is given, t is given. Now put everything and you comment me the answer. You can comment me. It is very easy. I know you can solve. Okay. U is 0, half, a is 3, t is 8 into 8. You multiply it, you solve it, and comment me the answer. Displacement is in meter. Okay. Student, in this question number 5, it is given that there are 2 drivers and there are 2 cars. Okay, 2 cars, sorry, car 1 and car 2. Car 1 is moving with 52 km per hour, and after 5 seconds this car will stops. Car 1 will stop after 5 seconds. Similarly, car 2 is moving with 34 km per hour, and after 10 seconds it will stop. So what you have to do, you have to plot the speed time graph of both the car which are moving along a straight line on a same graph paper. That is same graph paper you have to use, and you have to plot the speed time graph. Okay, and you have to also find which car is traveling more distance, car 1 or car 2, or which train travel farther. Okay, so first of all we have to convert this velocity in meter per second, because time is in second. That's why we have to convert into meter per second. How to convert? Very simple. I already explained all this thing in my previous videos. Okay, you directly multiply 5 by 18, that is 52 into 5 by 18. If you divide, first you multiply, then divide. Don't directly cut. If it is cancel, then you can cut. 2 9 is 18, 2 2 is 4, 2 6 is 12. Now it is not dividing, so you directly multiply. First multiply, then divide. If you do this, you will get
14.4 meter per second. You will get 14.4 meter per second. Similarly, if same thing you have to do for 34 kilometer per hour, you have to multiply by 5 by 18. Okay, again 2 9 ja 18, 2 1 ja 2, 2 7 ja 14. Now you have to multiply these two terms and then divide with 9. If you do, you will get approximately 17 into 5 you multiply, then divide by 9, you will get 8.9. Approximately you will get 8.9 meter per second. Now with this data you have to plot, with this data you have to use this all this value and you have to plot the speed time graph. It's very simple. How to plot a graph? Already I explained many things about graph, okay, in my previous videos. I hope that you have already watched all my previous videos. If you have not watched, please go to the description of this video. You will find one PDF, one playlist of full chapter, that is motion. Okay, for better understanding you can comment there. If you have any doubt, I will solve. Okay, now in this you have to draw the speed time graph. So mark y axis speed and always take time axis as x axis. तो कैसे प्लॉट करेंगे बताओ? आपके पास क्या है? u है 0, ठीक है, पहले के लिए फर्स्ट ड्राइवर के लिए u 0 है एंड v मतलब u 0 नहीं है, v 0 है. u इज हाउ मच? 14.4 meter per second and v is 0 in time how much? Time is he is taking 5 seconds. Time is equal to 5 seconds. Similarly for second driver u is how much? U is 34, that is 8.9 meter per second, approximately 8.9 meter per second. Final velocity becomes 0 and what time? Time is equal to 10 seconds. Now how to, with using this data you have to plot the graph. Initial velocity means what? Initial velocity when time is equal to 0. Here is the time, here time is 0, मतलब जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 14.4. तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी आपको जाना है 14.4. तो कैसे मार्क करोगे आप? तो आप जानते हो ग्राफ पेपर का यूज़ करना. ये 1 2 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है. तो एक को आप कितना ले लो? 4 यूनिट ले लो, ठीक है. मतलब एक यूनिट को आपने 4 ले लिया. ये कितना होगा? 8. ये कितना होगा? 12, ठीक है. ये कितना होगा? 16. मीन्स इन एक्स एक्सिस यू हैव टू राइट दिस थिंग. इन एक्स एक्सिस 1 यूनिट ऑफ ग्राफ, दैट इज 1 जो होते हैं ना, 10 मतलब 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट को मैंने क्या डिफाइन किया है? 4 मीटर पर सेकेंड. स्पीड इज इन मीटर पर सेकेंड. यू हैव टू मेंशन दिस. Speed I am taking meter per second. Now where is 14.4 lies? Here 12, 13, 14, in between them only. Suppose this is the point, you have to mark with the graph. Okay, graph का use करके proper mark करना. This is 14.4. Okay, this point is, suppose this is 14.4 meter per second. No need to write meter per second. Here I already written that meter per second. Now इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ही होता है जब टाइम 0 और उस समय वेलोसिटी, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जब टाइम 0 है और उस समय जो वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी. और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम कितना है? तो टाइम 10 सेकेंड तक मैक्सिमम है. तो आप 1 यूनिट को ले लो, 2 3, तो 1 यूनिट को आप 5 सेकेंड ले लो. टाइम इज इन सेकेंड. सो यू मेंशन, सॉरी, दिस इज इन वाई एक्सिस. ओके, यू मेक इट करेक्शन. दिस इज इन वाई एक्सिस एंड इन एक्स एक्सिस यू हैव टू मेंशन 1 यूनिट इज 5 सेकेंड. 1 यूनिट का मतलब 5 सेकेंड. तो 2 यूनिट कितना होगा? 10. 3 यूनिट 15 सेकेंड. क्लियर? वेरी इजी. नाउ हाउ टू प्लॉट दिस ग्राफ? इन 5 सेकेंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बिकम 0. सो दिस इज इन 5 सेकेंड, दिस इज इन वेलोसिटी, दिस इज अ वेलोसिटी एट 5 सेकेंड. सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू जॉइन दिस पॉइंट्स. ओके, सो यू जॉइन दिस पॉइंट, you will get a straight line. आपको इसको जोड़ देना है ऐसे, ठीक है. तो ये ड्राइवर 1 की हुई बात. उसी तरह फॉर ड्राइवर 2 8.9 मीन्स टाइम 0, 8.9 कहाँ होगा? यहाँ होगा. एंड टाइम कितना है? 10 सेकेंड में. तो 10 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो रही है. यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है 8.9, दैट इज 8.9 अप्रोक्सीमेटली. आपको एकदम परफेक्ट मार्क करना है, ठीक है. यहाँ स्केल रखना है ऐसे. Now you draw a line, straight line.
suppose this is cutting here only. This is for driver 2, this is for driver 1, this is for driver 2. This is the speed time graph for both the driver. Okay, now you have to find which is farther, which train is farther, means you have to find the distance traveled by driver A. So S1 is the distance traveled by, S1 is the distance, write down distance traveled by driver A, driver 1, ठीक है। ड्राइवर 1 की डिस्टेंस कितना होगा, S इज इक्वल टू क्या, एरिया ले लेंगे, क्योंकि स्पीड टाइम का एरिया क्या होता है, कैसे निकालेंगे बताओ, इसका एरिया क्या होगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स, राइट डाउन डिस्टेंस। तो इसके अंदर का एरिया क्या होगा बताओ, इसके अंदर का एरिया क्या होगा, पहला ये है तो इसके अंदर का एरिया ये वाला पार्ट है, देखो फर्स्ट वाले का। तो एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो S1 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस कितना है फर्स्ट वाले के लिए बताओ, ये एरिया लेना है आपको, ये वाला एरिया, फर्स्ट वाला का एरिया। इस ग्राफ के अंदर ये लाइन आ रही है ना, इस लाइन के अंदर ये सारे पार्ट आ रहे हैं, तो जो भी उस ग्राफ के अंदर जो आता है उस पूरे एरिया को लेंगे। तो ये क्या, एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो है ना, ये एक ट्रायंगल ही तो बन रहा है कि नहीं, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस दैट इज 5 माइनस 0, ये बेस हो गया, और ये हाइट है, हाइट इज हाउ मच, बेस इज 5, हाइट कितना है 14.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर क्या है 5 सेकेंड है, तो यहाँ मीटर पर सेकेंड है और यहाँ सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू हैव टू फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू कैंसिल इट, 2 7 14.2। सो S1 is 5 into 7.2. You multiply and comment me the answer. Similarly S2 you can find. For S2 which graph you have to take, which area you have to take, this area I am marking with red one. Okay, देखो यहाँ से मैं मार्क कर रहा हूँ this one, ठीक है, ये पूरा एरिया, इसके अंदर वाला भी एरिया आ जाएगा, ठीक है, ये इसके अंदर का भी एरिया आ गया। ये लाइन जो दिख रहा है ना तुमको, ये लाइन जो दिख रहा है देखो ऐसा, इसके अंदर का पूरा एरिया ले लेना। तो ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक, टोटल बेस इज 10, 0 से 10 है, 10 माइनस 0 इज हाउ मच, 10 इंटू हाइट इज हाउ मच, दिस हाइट इज 8.9. You solve this and comment me the answer. You can find S2. Now which one is farther, you also comment me. First find S1, then find S2, you multiply this and tell me which train is farther, train or car. You check it, I am taking car, which car is farther, you have to comment me. ड्राइवर ट्रेन नहीं होगा, कार ही होगा। ओके, थैंक यू।